Hello, good evening, students. Am I audible and visible, please? Very good evening. Give me the clearance. So very good evening to all of you. Welcome to PW platform. This is a PYQ series of NIC. I hope you are all doing well and your preparation भी बहुत अच्छा चल रहा होगा. This is basically operating system and algorithm PYQ session, जिसमें हम previous year questions देखेंगे operating systems and algorithms के NIC exam. I hope you are all doing very well and preparation is also doing good. Shall we start? Are you ready, boys and girls? Shall we start? Okay. तो देखिएगा, if you see the core subjects, अगर आप core subjects के PYQs देखें with regard to NIC exam, ये मैं कहूँगा कि it is exactly almost I could say 80 to 85% or maybe slightly more than that are PYQs of GATE. तो अगर आपने गेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर, दोज ऑफ यू हु हैव प्रिपेयर्ड फॉर गेट, जिन्होंने भी गेट के लिए तैयारी की होगी या तैयारी की है, तो उनके लिए बहुत ही केक वॉक होगा NIC एग्ज़ाम, बिकॉज जो भी क्वेश्चंस आए हैं और मोर और लेस प्रिडोमिनेंटली फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स ऑफ गेट के हैं, तो आपको काफ़ी आसानी होगी. यू ओनली हैव टू प्रिपेयर दी नॉन गेट कोर्सेस, नॉन गेट सब्जेक्ट्स, जैसे कि है अदर दैन कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, नेटवर्क थियरी है या फिर और कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से सब्जेक्ट है, एनालॉग है, और मे बी नॉन गेट सब्जेक्ट्स अगर हों, फॉर एग्जांपल वेब टेक्नोलॉजीज़ है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, वो सब्जेक्ट के लिए आप थोड़ा अच्छा प्रिपेयर कर लिए. अगर आपका गेट प्रिपरेशन ऑलरेडी है तो आई एम श्योर यू कैन वेरी वेल परफॉर्म हैव ए गुड परफॉर्मेंस इन दी NIC एग्जाम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे, देन वी विल गो अहेड विथ एल्गोरिथम्स. ओके, so let's start. Have a look at this. This question is from the subject of operating system, the topic of semaphores. Semaphore operation P and V operations है, down and up operation जो हम कहते हैं. So this is the question. I would like you to have a look at the question and then let me know your response first. This question I would say is based on what is called a hardware synchronization hardware by name TSL, test and set lock. आपने पढ़ा होगा शायद test and set lock. So this question is based on that. Atomic मतलब non-preemptive. The atomic fetch and set x comma y instruction unconditionally sets the memory location x to 1. It accepts a parameter by name x. It is going to set the value of x to 1 and then it returns the old value of x without allowing any intervening access to the memory location x. मतलब preemption नहीं होगा when you try to access TSL or when you try to execute TSL. So this is the function for down operation, यहाँ तक है function, and this is the function for up operation. P is down operation and V is up operation. So देखिएगा, this is the implementation for bind. This is the variable s which is actually pointing to x. We are taking a local variable by name y. We are taking the current value of the variable to which s is pointing. अगर आप scenario समझेंगे, this is variable s which is a pointer basically to the actual location x, right? It is pointing here as a pointer, and here you have critical section, for example. ऐसा समझिए आप. So s dot value means it will fetch the value of x. You are storing in some temporary variable here. So fetch and set x comma y. So whatever is the current value, basically you copy it into x, and then the value of x is copied into y, and you are setting the value of x to 1. This is the traditional TSL instruction. And then later you are setting the value of x to which it is pointing,
as, or maybe अगर आप x इसे replace कर दो to, because you are using another variable x here, तो अगर आप चाहो तो इसे बोल सकते हैं like lock variable L, something like that. So fetch and set x comma y. Conditionally, unconditionally sets the memory location x to 1 and fetches the old value of x in y. So that is the meaning of fetch of set x and y. So conditionally copies the value of x into y and sets x always to 1. This is the meaning of it. Okay. So now the question is options dekh lijiyega. Which of the following is true? Come on, read the options carefully and tell me what is the response. What is the response for this? आपके हिसाब से क्या होगा आंसर? According to you, what will be the answer? ये previous gate question है, famous gate question on test and set. Any answers? The first option say the implementation may not work if context switching is disabled in P. चलिए यहाँ पे एनालाइज करेंगे. तो मतलब अगर ये कोड में देखिए, ये तो P ऑपरेशन आप इंप्लीमेंट कर रहे हो यूजिंग फेच एंड सेट. तो अगर यहां पर अगर आप कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग डिसेबल करेंगे, मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग डिसेबल करने का मतलब है नो प्रीएम्पशन. इफ यू अलाउ नो प्रीएम्पशन, इफ यू अलाउ नो प्रीएम्पशन, अगर आप कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग डिसेबल कर दोगे यहां पर व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द P ऑपरेशन, फिर से एक बार देख लीजिए, इज डिसेबल्ड इन P ऑपरेशन, ये P ऑपरेशन है. तो इन दिस P ऑपरेशन इफ सम प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग दिस एंड इफ यू डिसेबल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, अगर आप कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग डिसेबल कर दोगे, नो प्रीएम्पशन कंडीशन एनफोर्स करोगे, तो क्या होगा? तो एक प्रॉब्लम होगा इफ यू ट्राई टू एनालाइज. सपोज फॉर एग्जांपल इफ द करंट वैल्यू ऑफ x इज 1, मान लीजिए x की वैल्यू 1 है, then what is going to happen? You are going to copy the value of x into y. You are going to copy the value of x into y, and then the value of y will be true, so therefore it keeps on executing this loop infinitely, indefinitely, infinitely without any preemption. Then the program is going to get stuck always. The program is going to stuck always when the value of x is 1, and if you disable context switching, it will be ending up like a deadlock. It will be ending like a situation of a deadlock. So therefore, the first option of this question itself is the correct answer. The implementation will fail if context switching is disabled in P operation. So therefore, this is the correct option for this. Instead of using fetch and set, अगर आप pair of normal load and store operations use करोगे, तो आपको problem होगा preemption का, जहाँ पर mutual exclusion condition satisfy नहीं होगा. So therefore this is wrong. The implementation of V is wrong. This is totally incorrect. Implementation of V is absolutely correct. It does not implement binary semaphore. वो भी गलत बात है, वरना अगर आप context switching enable नहीं करोगे, तो this is the correct implementation of down and up operation. बिल्कुल सही है. So therefore only option A is wrong. If context switching, that is preemption, is disabled, this implementation will not work because it will go into deadlock. ये है इसकी analysis question. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे. इसका आंसर बताइए. एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है गेट का ऑन इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग. तो कंसीडर 3 processes all arriving at time 0 with total execution time of 10, 20 and 30 units. देखिएगा, each process spends 20% of its execution time doing IO, next 70% time on computation, and the last 10% of time doing IO again. The operating system uses shortest remaining time first, SRTF, shortest remaining time first scheduling, and schedules a new process either when the running process gets blocked on IO or when the running process finishes its compute burst, right? Assume that all IO operations can be overlapped. Can be overlapped मतलब ये है कि you can have multiple IO devices, so all IO operations can proceed further, can proceed parallelly. For what percentage of time does the CPU remain idle? तो पहले हमें डेटा गैदर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद गैंट चार्ट बनाएंगे. गैंट चार्ट बनाने के बाद हम देखेंगे कि कितना परसेंटेज ऑफ टाइम द प्रोसेसर वुड रिमेन आइडल. स्लाइटली लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन आप वर्कआउट कर सकते हो. ठीक है, तो पहले हम डेटा गैदर करेंगे, यहां पर बना लेंगे. लेट्स से दिस प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम, और यहां पे टोटल इसका एग्जीक्यूशन टाइम लिखेंगे हम, एग्जीक्यूशन टाइम.
तो देखिएगा एक बार रीड कर लीजिएगा, ऑल अराइविंग एट टाइम 0 विद टोटल एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ 10, 20 एंड 30। तो यहां पर लिख लीजिए 1, 2, 3, 3 प्रोसेसेस, देयर रेस्पेक्टिव अराइवल टाइम्स आर 0, 0, 0, एग्जीक्यूशन टाइम्स आर 10, 20, 30। अब इसका जो ब्रेकअप है आपको अंडरस्टैंड करना होगा। देखिएगा ईच प्रोसेस, यस दैट इज करेक्ट, शुभम मौर्य यू आर करेक्ट, 10.6 आपने शायद वर्कआउट किया होगा पहले। ईच प्रोसेस स्पेंड द फर्स्ट 20% ऑफ इट्स टाइम ऑन आईओ। चलिए यहां पर लिख लेंगे, ये जो लाइफ साइकिल है इस तरीके से है, इनपुट आउटपुट है, फिर कंप्यूटेशनल बर्स्ट है, बर्स्ट टाइम लिखेंगे हम, फिर लास्ट में फिर आईओ है। तो इसका परसेंटेज कितना है यहां पर लिख लीजिएगा, दिस इज परसेंटेज 20% है, दिस इज 70% है, ये लास्ट का जो है 10% है ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम। तो इस लिहाज से अगर आप वैल्यूज यहां पर अगर लिखोगे तो 20% ऑफ 10 मतलब ये होगा 2, 20% ऑफ 10 ये होगा 2, 70% ऑफ 10 मतलब 7 होगा, 10% ऑफ 10 इज 1, ठीक है ना। देखिएगा 20% ऑन आईओ, 70% ऑन कंप्यूटेशन एंड द लास्ट 10% ऑन आईओ, वही मैंने लिया। अब सेकेंड प्रोसेस का बना लीजिए, क्या है डेटा, 20% ऑफ दिस मतलब ये 4 है, ये 70% ऑफ दिस इज नथिंग बट 14 है, और 10% में 2 है। और फिर लास्ट प्रोसेस का जो ब्रेकअप होगा, दिस इज 6 है, दिस इज 21 एंड दिस इज 3 यूनिट्स। ये हो गया आपका ब्रेकअप, दिस इज ऑल योर ब्रेकअप। बिल्कुल सही जवाब है अपर्ब, अंकुश कौतिकार, शुभम मिश्रा, योर आंसर्स आर राइट। लेकिन जिन्हें पता नहीं है यहां पर आप देख सकते हो, मैं गैंट चार्ट बनाऊंगा, सो प्लीज हैव अ लुक। ओके, so let's prepare the Gantt chart. पहले हम ready queue ले लेंगे। So this is the ready queue, imagine, and here this is the CPU. चलिए, this CPU is a ready queue. चलिए, so the type of scheduling being used is SRTF. जनरली जब मैं गेट में सॉल्व करता हूं ये क्वेश्चन, वी यूज टू वर्कआउट विद FCFS, लेकिन शेड्यूलिंग टेक्निक आप कोई भी यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो। So all the processes are there in the ready queue in the order P1, P2, P3 initially. But यहां पर जो पॉइंट है टाइम 0, देखिएगा जो ओनली पॉइंट यहां पे जो आपको अंडरस्टैंड करना है कि प्रोसेस कैन नॉट स्टार्ट IO ऑपरेशन डायरेक्टली फ्रॉम रेडी क्यू। द प्रोसेस विल हैव टू स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन फर्स्ट ऑन CPU, बिकॉज IO ऑपरेशन भी परफॉर्म करने के लिए आपको एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा CPU पर, लाइक printf और scanf, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, रीड और राइट। तो मतलब यहां पर इनहेरेंटली नॉट गिवन, लेकिन दिस इज इनहेरेंटली implied that P1 is going to run on CPU for negligible time and then it's going to begin IO. Then it's going to begin IO. कितने टाइम के लिए? 2 यूनिट्स के लिए। तो P1 is going to finish IO at time 2. फिर उसके बाद while P1 has started IO, P2 will also runs for negligible time on CPU and this fellow will also go for IO operation concurrently, overlapping IO operation. मतलब ये 4 यूनिट्स के लिए है, सो इट इज गोइंग टू फिनिश एट टाइम 4। यहां पर P3 रन करेगा नेग्लिजिबल टाइम 0 के लिए, फिर उसके बाद P3 भी सब्सिक्वेंटली IO ऑपरेशन परफॉर्म करेगा फॉर 6 यूनिट्स, सो इट इज गोइंग टू फिनिश एट टाइम 6। ये है पहला फर्स्ट पॉइंट। ऑल 3 processes have started concurrently IO. As per the question, the IO operations can go on concurrently. इस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। So now the processor is idle. So all 3 processes have been executed. So the CPU is idle. There is no job available at time 0 for CPU to run, right? So what happens? 0 till what time? 0 till time 2, the CPU is going to be idle. This is idleness. क्यों? क्योंकि the first process who is going to complete IO is P1 at time 2, next P2 at time 4, next P3 at time 6. So P1 is going to finish this IO and join the ready queue, put into the ready queue at time 2. Now this is the only process at time 2, right? तो यहां पर क्या होगा? 0 to 2 तो idle है. Now at time 2 P1 will run because that is the only process available. It needs 7 units. It is going to run till 7 units of time, right? Till 7. अगर आप मान लीजिए टाइम 4 पर अगर आप प्रीएम्प्ट करोगे, नेक्स्ट प्रोसेस जो आएगा उसका बर्स्ट टाइम 14 ज्यादा रहेगा, और टाइम 6 पर तो आई मीन प्रोसेस टाइम 6 पर 2 to 6 अगर आप यूनिट्स रन करोगे एट टाइम 8, then also P1 only will have the lowest burst time, so therefore P1 preempt नहीं होगा, P1 is going to run for 7 units, मतलब 9, 2 plus 7 9, ठीक है ना।
So at time 9, P1 is going to finish its 7 units of burst, and then after that P1 need to perform IO operation. P1 अपना second IO operation start करेगा for 1 unit, going to finish at time 10. Boys and girls, please see. अब यहाँ क्या होगा, P2 is going to finish its IO at time 4. तो P2 ने अपना टाइम, जब मेरा टाइम 4 था, P2 ने अपना IO कंप्लीट किया, तो I join the ready queue. फिर उसके बाद at time 6 P3 also has finished IO and joined ready queue. तो यहाँ पर बच्चों, when P1 is performing IO in the ready queue, I have P2 and P3. देखिएगा P2 and P3. P2 का burst time है 14, P3 का burst time है 21, shorter burst time है P2 का, so P2 is going to run. P2 is going to run. P2 कितने टाइम के लिए रन करेगा? 14 यूनिट्स के लिए रन करेगा. 14, 9 plus 14 मतलब 23. In between 9 and 23 at time 10 P1 completed IO, so P1 will join the ready queue for executing its last instruction, that is completion. फिर उसके बाद at time 23 P2 will go for IO. P2 will go for IO. For how long? Last IO, that is 2 units. मतलब at time 25 it is going to finish. At time 25 it is going to finish its IO to P2. फिर meanwhile क्या होगा? P3 also joined the queue, so P3 is going to take the charge on CPU for running 21 units because that is the only job available. So 21 मतलब 44. Between 23 and 44, P2 has completed its IO and joins the ready queue. Meanwhile, P3 at time 44 will go for its last IO operation of 3 units. 47 it is going to finish. 47 it is going to finish. So देखिएगा आप. Now time is 44. So at 44, P1 is going to run on CPU for negligible time and finish. This is the completion time of P1. फिर उसके बाद क्या होगा? P2 is going to run for negligible time and complete its execution. अब देखिएगा P1 और P2 complete हो चुके, only process pending is P3. And P3, very good Shubham. P3 is going to finish its IO at time 47. मतलब ये हुआ 44 to 47 के लिए again processor is going to be idle. Again processor is going to be idle. 44 से 47. At time 47 P3 is going to finish its IO and join the queue. And then P3 is going to run on CPU for negligible time. 47 it is going to complete. ये है हमारा टोटल गैंट चार्ट. तो अगर आप शेड्यूल लेंथ देखोगे, शेड्यूल लेंथ इज P1 to P3 47. ये जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम में फॉर हाउ लॉन्ग, सो दिस इज माय शेड्यूल लेंथ L 47. तो ये 47 यूनिट्स में हाउ लॉन्ग द प्रोसेसर वाज आइडिल, कितने टाइम के लिए प्रोसेसर आइडिल रहा. तो यहां पर हम बोलेंगे 2 यूनिट्स यहां पर आइडिल था और यहां पर 3 यूनिट्स, तो टोटल 5 यूनिट्स के लिए आइडिल रहा. और क्वेश्चन भी यही पूछा जा रहा है, फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम डज द सीपीयू रिमेन आइडिल, कितने परसेंटेज के लिए. परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए. तो परसेंटेज सीपीयू आइडिलनेस अगर आप निकालोगे, दिस विल गिव यू 5/47. तो अगर आप इसे वर्कआउट करोगे, दिस इज नथिंग बट 10.6%. एब्सोल्युटली द आंसर. ये है हमारा आंसर. So therefore from the options, option B is correct. ठीक है, this is the correct option. So मैं कहूँगा बच्चों, in the context of scheduling ये एक one of the difficult problem है, one of the important problem है. अगर आप ये level के problems को prepare करेंगे, then remaining all questions will become easy for you. तो जिन्होंने पहली बार देखा है solution, my advice is you watch the video again for this solution if you have any confusion, ताकि आपको comfort level काफ़ी improve हो for such problems. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे. Look at this question and answer me. This is very simple question. बहुत simple question है, बताइएगा आंसर. Yes. वेरी करेक्ट, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है. स्टारवेशन कौन से शेड्यूलिंग में कंपलसरी होगा? डेफिनेटली होगा स्टारवेशन प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में. राउंड रॉबिन स्टारवेशन फ्री. एफसीएफएस बाय एंड लार्ज इन जनरल स्टारवेशन फ्री है, लेकिन पोटेंशियली एफसीएफएस में भी वेरी रेयर कंडीशन में स्टारवेशन होता है. लेकिन यहाँ पर एफसीएफएस में हम मानेंगे नहीं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है. बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है NIC का 2017 का. एज एन MCQ मतलब आपको एक ही ऑप्शन करेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा. तो एज एन MCQ क्वेश्चन डेफिनेटली ऑप्शन ए इज करेक्ट. हाँ, अगर गेट का MSQ क्वेश्चन होता, गेट में 2023 में ऐसा ही क्वेश्चन MSQ में पूछा गया,
तो एज एन MSQ क्वेश्चन 2 ऑप्शंस करेक्ट होंगे। FCFS भी हम लेंगे MSQ अगर होता, और प्रियोरिटी भी अगर होता, अगर MSQ होता। क्योंकि MCQ है, एक ही ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, तो डेफिनेटली हम प्रियोरिटी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ना? दिस इज द वे टू आर्ग्यू फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका बताइएगा प्लीज, आप वर्कआउट करके बताइए इसका आंसर क्या है बॉयज एंड गर्ल्स। HRRN is starvation fee, but LRTF will not be a starvation free. Shubham Amoria. Come on, you please work out this simple question, boys and girls. बच्चों ये वर्कआउट करके बताइए इसका आंसर। ये भी प्रीवियस गेट क्वेश्चन है। Rishi Sharma is saying option A. What about other people? Sriya is also saying option A. Very good. Yes, Shubham Moria is also saying. Other people also, those who have not worked, please work out. Let's start. Consider a system having m resources of the same type. These resources are shared by 3 processes. देखिएगा हम यहाँ पर लिखेंगे 3 processes ABC, जिनका पीक डिमांड है 346. इज अ डिमांड फॉर रिसोर्स m. ये डिमांड है प्रोसेस का. द मिनिमम वैल्यू ऑफ m दैट इंश्योर डेडलॉक विल नेवर अकर. डेडलॉक ना होने के लिए मिनिमम कितने कॉपीज ऑफ m होना चाहिए? आपको पता है डेडलॉक कब होगा? जब एवरी प्रोसेस विल फॉल शॉर्ट बाय 1 कॉपी. मतलब अगर आप A को 2 कॉपी दोगे, B को 3 कॉपी दोगे और इसे 5 दोगे, मतलब 10 कॉपीज भी अगर हों तो आपको डेडलॉक हो सकता है. दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम कंडीशन फॉर डेडलॉक. ये आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक चैप्टर में पढ़ा होगा. मैक्सिमम कंडीशन फॉर डेडलॉक टू हैपन इज व्हेन एवरी प्रोसेस फॉल शॉर्ट बाय 1 अगेंस्ट इट्स डिमांड. देखिए डिमांड दी है, अगर आपने 2 दिया, 4 है, 3 दिए, 6 है डिमांड और आपने 5 कॉपीज दिए, तो दिस इज द मैक्सिमम कॉपीज टू कॉज डेडलॉक. अगर आप डेडलॉक ना चाह रहे हो तो आप मिनिमम एक एक्स्ट्रा होना पड़ेगा. तो इफ यू ऐड 1, डेडलॉक विल नॉट हैपन. ये बेसिक फंडा है, बेसिक कॉन्सेप्ट है डेडलॉक का. तो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज 11. वेरी करेक्ट. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. चलिए आगे बढ़ेंगे. चलिए इसका आंसर बताइएगा. बहुत सिंपल है ये भी बच्चों. आई विल गिव यू 2 minutes ऑफ टाइम. आई विल जस्ट ज्वाइन विद इन 2 minutes. इसका आंसर मुझे वर्कआउट करके बताइए. वेरी इंटरेस्टिंग मेमोरी मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, पेज फॉल्ट के ऊपर. आप जरूर कर सकते हो. वर्कआउट प्लीज.
What is the answer, please? Answer is C. Okay. Let us read the question and try to work out. The address sequence generated by tracing a particular program executing in a pure demand paging system with 100 records per pager. Page size आपकी 100 है. With one free main memory frame. आपके पास एक ही फ्रेम है. This frame, एक ही फ्रेम, one frame. What is the number of page faults? देखिए यहां पर चूंकि एक ही फ्रेम जब होगा तो पेज रिप्लेसमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कौन सा यूज करोगे आप, कोई सेंस नहीं रहेगा. इज इट नॉट? व्हेन वी हैव मल्टीपल फ्रेम्स देन ओनली पेज रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा, राइट? तो पेज कौन सा पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक हम यूज करेंगे जब हम कॉन्सेप्ट होगा. चलिए, ये जो आपका एड्रेस सीक्वेंस है, ये एड्रेस सीक्वेंस में आपको पेज नंबर डिटरमिन करना है. यहां पर जो कॉम्प्लेक्सिटी है क्वेश्चन की वो सिर्फ यही है कि पेज नंबर आप कैसे करोगे. अगर ये एड्रेसेस है तो आपको जनरल फार्मूला पता होना चाहिए. पेज नंबर इज गिवन बाय वर्चुअल एड्रेस डिवाइडेड बाय पेज साइज, और पेज ऑफसेट जो है वर्चुअल एड्रेस मॉड्यूलो पेज साइज, रिमाइंडर मॉड्यूलो पेज साइज. ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है. When virtual address is given as a decimal number, page number will be given by virtual address by page size, and page offset is given by virtual address modulo page size. तो अब ये जो एड्रेस है 100, तो मैं यहां पर आपको रेफरेंस स्ट्रिंग डिराइव कर लूंगा, ठीक है ना. रेफरेंस स्ट्रिंग इज नथिंग बट पेज नंबर्स. तो 100 में पेज नंबर क्या होगा? 100 डिवाइडेड बाई 100 पेज नंबर 1, 200 डिवाइडेड बाई 1 पेज नंबर 2, 430 डिवाइडेड बाई 4 पेज नंबर 4, फिर उसके बाद 499 अगेन 4, राइट, अगेन 4, विल राइट इट वंस, नो प्रॉब्लम. फिर उसके बाद आएगा 5, फिर उसके बाद फिर से 5 आएगा, फिर से 5 आएगा, फिर उसके बाद आएगा 1, फिर उसके बाद आएगा 2, फिर से आएगा 2, फिर 2, फिर उसके बाद आएगा 3, लास्ट में आएगा फिर से 3. दिस इज माय रेफरेंस स्ट्रिंग. अगर आप ये रेफरेंस स्ट्रिंग के बेसिस पर अगर एग्जीक्यूशन करोगे तो यहां पर मैं फ्रेम ले लूंगा. ये है आपका फ्रेम. फर्स्ट टाइम पेज फॉल्ट, कितने पेज फॉल्ट्स हमें कैलकुलेट करना है, तो यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स, ठीक है. तो पेज नंबर 1 इज कॉजिंग द फर्स्ट पेज फॉल्ट. फिर उसके बाद क्या होगा? पेज नंबर 2 विल कॉज ए फॉल्ट, 2 रिप्लेस कर देगा 1 को. फिर उसके बाद 4 विल कॉज ए फॉल्ट, 4 रिप्लेस कर देगा 2 को, ठीक है. मैं रिमूव कर दूंगा. फिर अब हम लिखेंगे 4. उसके बाद देखिए नेक्स्ट 4 विल नॉट कॉज फॉल्ट बिकॉज 4 इज ऑलरेडी अवेलेबल. फिर उसके बाद 5 कॉजेस पेज फॉल्ट, सो 4 की जगह 5 आ जाएगा, ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 विल नॉट कॉज फॉल्ट. उसके बाद फिर से 1 कॉज करेगा पेज फॉल्ट, तो फिर 1 आ जाएगा. अब यहां पर मेमोरी में 1 आएगा. फिर उसके बाद 2 विल कॉज ए फॉल्ट, सो 1 की जगह 2 आ जाएगा, ठीक है. फिर 2 and 2 विल नॉट कॉज ए फॉल्ट. उसके बाद 3 विल कॉज ए फॉल्ट, सो देयरफॉर 3 अब आ जाएगा 2 की जगह. फिर उसके बाद 3 होगा, रेफर विल नॉट कॉज ए फॉल्ट. अगर आप कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ पेज फॉल्ट स्ट्रेट अवे 1 2 3 4 5 6 7, तो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज सी. दिस इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका जल्दी आंसर बता दीजिएगा बच्चों, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है पेजिंग का. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. दिस इज नॉट गेट क्वेश्चन. कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज वर्क आउट एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर फॉर दिस. वेरी डायरेक्ट आंसर इज बी, 32 बिट वर्चुअल एड्रेस. देखिएगा वर्चुअल एड्रेस इज इक्वल टू 32 बिट्स, फिजिकल एड्रेस इज इक्वल टू 28 बिट्स, पेज साइज 2 किलोबाइट्स. हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द वर्चुअल एंड फिजिकल पेज नंबर? सो पेज नंबर विल बी गिवन बाय व्हाट? देखिए आप एड्रेस फॉर्मेट उतार लीजिए वर्चुअल एड्रेस का. वर्चुअल एड्रेस विल हैव पेज नंबर एंड ऑफसेट, फिजिकल एड्रेस विल हैव frame number and offset. Sorry. तो वर्चुअल एड्रेस इज 32 बिट्स. तो पेज साइज आपका 12 बिट्स है, मतलब D इज 11. तो ये कितने बिट्स हो गए? दिस इज 21 बिट्स पेज नंबर, दिस 11, और टोटल साइज है 28 बिट्स. दिस टोटल साइज इज 28. तो ये कितने बिट्स हो गए? 17. तो स्ट्रेट अवे 21 and 17, आंसर इज बी, जैसा आपने कहा. वेरी गुड. देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन. कम ऑन, work out and tell me. This is also PYQ.
Consider three processes 0, 1, 2 with compute time burst of 2, 4 and 8 time units. All processes arrive at time 0. Consider the longest remaining time, LRTF. Very correct, Sham. Sriya, absolutely correct. In LRTF, ties are broken by giving priority to the process with lowest process ID. The average turnaround time is how much? तो आपको Gantt chart बनाना पड़ेगा. All processes arrive at time 0 with burst times of 2, 4 and 8. चलिए बनाएंगे यहाँ पर Gantt chart. We have process number, arrival time and burst time. 1, 2, 3. Arrival time is 0. Burst times are 2, 4 and 8. अगर आप Gantt chart बनाओगे, right, using LRTF scheduling, LRTF, this is CPU, time 0. Which process are we going to begin our execution with first? Which process? Come on. So we are going to begin with P3. How long P3 should start? Because this is the longest. We are going to run for 4 units. जब हम 4 units के लिए run करोगे, इसका balance बनेगा 4, right? Yes, Vaibhav. Good morning. Good evening. This is 4 and this is 4 at tie. So tie is broken in favor of lower process ID. यहाँ preempt होगा और chance दोगा P2 को. P2 will run for 1 unit, 3. ये highest हो गया, right? So this become longer. So preempt in favor of P3. P3 एक unit के run करेगा. इसका time होगा 3 balance. So 3 and 3 there is a tie. So lower process ID मतलब P2. तो इस तरीके से run होते जाएंगे. फिर उसके बाद P3 become longer. So P3 is going to run for 1 unit. So 2. This become 2. तो अब यहां पर देखिएगा, करेक्ट, श्याम इज करेक्ट. सो 2, 2, 2 मतलब P1 रन करेगा लोअर प्रोसेस आईडी. P1 विल रन फॉर 1 यूनिट 9. सो इज बैलेंस बिकम 1. ये दोनों में हाईएस्ट है 2, 2. तो बट लोअर प्रोसेस आईडी मतलब P2 रन करेगा 1 यूनिट के लिए, वह बैलेंस बनेगा 1. फिर उसके बाद P3 रन करेगा 1 यूनिट के लिए, तो इसका बैलेंस हो गया 1. अब सभी प्रोसेसेस का 1 यूनिट बाकी है. तो मतलब P1 फर्स्ट रन करेगा लोअर प्रोसेस आईडी टाइम 12, फिर P2 रन करेगा टाइम 13, फिर लास्ट में P3 रन करेगा टाइम 14. तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम अगर आप कैलकुलेट करोगे, इट इज नथिंग बट 12 माइनस 0 प्लस 13 माइनस 0 प्लस 14 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3. तो दिस इज नथिंग बट 39 बाई 3, 13. तो आपका आंसर होगा 13. तो ऑप्शंस में देखिएगा, ऑप्शन ए, दैट इज वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे. कम ऑन, टेल मी द आंसर फॉर दिस. व्हाट इज आंसर फॉर दिस? कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स. Prepare the Gantt chart. There are 3 processes, 10, 20 and 30 time units arriving at time 0, 2 and 6. डेटा अगर आप यहाँ पे गैदर करोगे, प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम, बस टाइम 1, 2, 3, 0, 2 and 6. Bus times are 10, 20 and 30. Using SRTF. Yes, using SRTF, shortest remaining time for scheduling algorithm. Do not count the context switches at time 0 and the end. How many context switches are taking place? Very simple. अगर आप Gantt chart बनाओगे using SRTF, this is CPU, time 0. We are going to start with P1. Run for 10 units because that is the shortest. फिर उसके बाद P2 run करेगा, that is the next shortest, so time 30. And lastly P3 run करेगा, time 60. 30 plus 30. This is the Gantt chart. अगर आप first context switch और last context switch count नहीं करोगे, number of context switches are 2. There are 2 context switches. So it is just like FCFS. बिल्कुल सही जवाब. So therefore the answer is C. Very correct. The answer is C. Right? Oh, अच्छा ठीक है, no problem. Both are correct. Maybe there's a typo mistake. You can ignore. Otherwise, यहाँ पर आप क्या करो? You just change the option. अगर दोनों भी वही है, तो 3 बना दीजिए. ठीक है? तो चलो, आंसर इज सी. चलिए आगे बढ़ेंगे. ये फिर से एक बार पूछा गया है, देखिए, और एक आई मीन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम में लीड टू स्टारवेशन. फिर से वही रिपीटेशन, लेकिन ऑप्शन अलग है.
तो यहां पर क्या बोलोगे आप? फीफो ना होगा, राउंड रॉबिन ना होगा, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट होगा आंसर। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसका आंसर बताइए प्लीज, एक बार रीड कर लीजिए क्वेश्चन, प्लीज रीड द क्वेश्चन वंस। A scheduling algorithm assigns priority proportional to the waiting time of a process. मतलब priority will depend on waiting time. Every process starts with priority 0. जब ready queue में आएगा process, is ready queue, तो जब जो भी process यहां पर आएगा उसकी priority होगी 0, which is the lowest priority. The scheduler reevaluates the process priority every t units. हर t units के बाद process की priority reevaluate होगी and decide the next process to schedule. Which of the following is true if the processes have no IO operation and all arrive at time 0? हर process time 0 पर जब आ रहा है तो हर एक uniform priority होगी और हर evaluation t के बाद हर एक की priority uniformly improve होगी, increase होगी। तो मतलब ये जो algorithm work करेगा, this will work exactly like round robin. This is exactly like round robin. हर preemption आफ्टर टी यूनिट्स के बाद प्रोसेसेस की प्रायोरिटी रीवैल्यूएट होगी, प्रीएम्प्ट होगा, नेक्स्ट प्रोसेस रन करेगा। तो मतलब दिस इज प्योरली राउंड रॉबिन। तो दिस एल्गोरिथम इज इक्वल टू राउंड रॉबिन, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये भी बहुत सिंपल है, बोलिए आंसर। डायरेक्ट प्रॉब्लम है, डायरेक्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी बेलाडीज एनोमली में अकर? वेरी सिंपल, कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स। बेलाडीज एनोमली कौन से शेड्यूलिंग टेक्निक में होगी? बहुत सिंपल है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में होगी, राइट? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सफर्स फ्रॉम बेलाडीज एनोमली, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज स्वैप स्पेस? जब आप प्रोसेस को स्वैप करोगे मेमोरी से डिस्क पर स्वैप करोगे फॉर द पर्पज ऑफ मे बी परफॉर्मेंस या थ्रैशिंग के लिए जब आप स्वैप करते हो तो स्वैप स्पेस कहां पे होगी? स्वैप स्पेस डिस्क पे होगी, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसका आंसर बता दीजिए। ये भी बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। The process that is based on IPC mechanism which executes on different systems and can communicate with other processes using message based communication, इसको क्या हम क्या बोलेंगे? Message based on IPC mechanism which executes on different systems that can communicate with other processes using message based communication system is called what? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर आप जब कम्युनिकेट करोगे तो आईपीसी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बोलेंगे, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, ये भी बहुत सिंपल है, बैंकर्स एल्गोरिथम का आंसर बता दीजिए प्लीज। व्हाट इज आंसर फॉर दिस? डायरेक्ट जो स्टेटमेंट है बैंकर्स का वो नहीं दिया गया है, लेकिन आपको थोड़ा सोच समझ के जवाब देना है यहां पर, ठीक है? टू रेक्टिफाई डेडलॉक ये नहीं हो सकता, टू प्रिवेंट डेडलॉक, टू डिटेक्ट डेडलॉक से देखिए बैंकर्स एल्गोरिथम इज नॉट फॉर डिटेक्शन, टू डिटेक्ट एंड सॉल्व ये भी नहीं है, तो मतलब टू प्रिवेंट डेडलॉक। एक्चुअल वर्ड जो होना चाहिए था अवॉइड है, अवॉइडेंस और प्रिवेंशन थोड़ा सिनोनिमस है, इसलिए हम ऑप्शन बी से जाएंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बैंकर्स एल्गोरिथम इज यूज फॉर अवॉइडेंस, क्योंकि यहां पर अवॉइडेंस वर्ड यूज नहीं किया गया है, अवॉइड और प्रिवेंट सिनोनिमस है, तो इसलिए हम ऑप्शन बी पे जाएंगे, प्रिवेंट डेडलॉक, ठीक है? चलिए इसका आंसर बोलिए। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, दिस इज नॉट ए गेट क्वेश्चन, ये जो है क्वेश्चन गेट का नहीं है, इट इज एक्सक्लूसिवली गिवन फ्रॉम PYC NIC पेपर। आंसर बताइए इसका। Come on, boys and girls. Which of the following statements is true with regard to semaphore? Semaphore के perspective से कौन से statements correct है? Rishi Sharma is correct, Shyam is correct, very good. Boys and girls, you are doing well. P and V operation should be indivisible, atomic, बिल्कुल सही जवाब। A semaphore implementation should guarantee that threads do not suffer indefinite postpone, मतलब starvation नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। If several threads attempt P operation simultaneously, only one thread should be proceed, that is correct। मतलब आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तो हम इसे रब कर देंगे और ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट, कंसिडर अ प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेसेस इज कॉल्ड, क्या है? देखिए, कॉपिंग ए प्रोसेस, बोलिए व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस? कॉपिंग ए प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू क्रिएट रूम फॉर अदर प्रोसेस इज कॉल्ड, वेरी सिंपल, व्हाट डू यू कॉल दिस कॉन्सेप्ट एज? दिस इज कॉल्ड स्वैपिंग, बिल्कुल सही जवाब श्रिया। स्वैपिंग, इसे हम स्वैपिंग कहते हैं, डिमांड पेजिंग नहीं, स्वैपिंग, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट,
This is very simple question. Degree of multi-programming is controlled by what? Come on, boys and girls. Please respond. Degree of multi-programming, बहुत simple question है. जो 3 schedulers है, long term, short term, medium term, या फिर dispatcher है, तो इनमें कौन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस होगा सिस्टम में, कौन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम कंट्रोल करता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल्स डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही जवाब. ये इसका आंसर. दिस इज नॉट गेट क्वेश्चन, लेकिन आप बता सकते हो आंसर. विच टेबल इज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर लिंक लिस्ट एलोकेशन? फाइल सिस्टम का टॉपिक है. तो डॉस के इंप्लीमेंटेशन में जो इंफॉर्मेशन हम मेंटेन करते हैं, जो टेबल का नाम है, वो टेबल को क्या कहते हैं? वो टेबल का नाम है फैट. बिल्कुल सही जवाब, फाइल एलोकेशन टेबल. So this stands for file allocation table, which is based on linked approach. This is based on linked approach. That's why it is asking this linked list. Linked approach होगा ये. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, ये चलिए, ये आपको वर्कआउट करना है. मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा. एवरीबडी प्लीज वर्कआउट दिस डेटा सेट. इनफैक्ट बच्चों, अगर आपने मेरा लेक्चर वॉच किया हो, दोज हु आर पेड बैच स्टूडेंट्स ऑफ NIC, मेरा अगर लेक्चर वॉच किया हो, तो लेक्चर में मैंने एग्जैक्टली सेम डेटा सेट लिया है फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ डिसशेड्यूलिंग. और क्वेश्चन भी एग्जैक्टली वही है, सेम डेटा सेट. गैल्विन का डेटा सेट है ये. तो यूजिंग SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, हाउ मेनी सीक्स आर मेड, टोटल सीक्स मेड आर हाउ मेनी? ये डायरेक्ट प्रॉब्लम है, बिल्कुल डायरेक्ट. व्हाट इज आंसर? अर्चिता पाल, निशु कुमार, प्लीज चेक इट अगेन. इज इट A or C? Is it A or C? I would appreciate you work out this problem. आप वर्कआउट करके बताइएगा आंसर प्लीज. What will be the answer for this? Come on, come on. What will be the answer for this? The answer for this will be 236, as Nishu has said. So therefore, that is correct. 236, not 246. 236 should be correct. Correct. Priya is correct. Come on, work out for this. Next question. Yeah, this is also not a gate question. I'm sure you should tell me the answer. What will be the answer for this? On computers where there are multiple operating systems, the decision to load a particular one is done by whom? जब आप boot करोगे, तो कौन डिसाइड करेगा कि which operating system should come into main memory? The answer is D, very correct. Bootloader will do that. Very correct. Next question. Come on, tell me this. ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, गेट का नहीं है, आप बता सकोगे आंसर जरूर. टेल मी द आंसर फॉर दिस. Contiguous memory allocation having variable size. Variable size partition will suffer from which fragmentation? Very simple. Variable size partition will suffer from which fragmentation? Yes, Riya is correct. A, external fragmentation. Fixed tuple size formulation or fixed tuple size, fixed partitions will suffer from internal fragmentation and variable partitions will suffer from external fragmentation. ये बात आपको याद रखने की है. So therefore correct option is A. बिल्कुल सही जवाब. Next. आंसर बताइए. डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. प्लीज वर्कआउट एंड टेल. दिस इज नॉट ए गेट क्वेश्चन, लेकिन आप जरूर कर सकोगे. If main memory access time is 400 microsecond, memory access time is 400 microsecond. TLB access time C is 50 microseconds. Consider the TLB hit ratio X is 90%. Effective memory access time, average memory access time कितना होगा? जल्दी वर्कआउट करके बताइएगा बच्चों. What is the answer for this? You need to work out. आपको आंसर क्वेश्चन, I mean the formula, I hope you know it. The formula is with TLB X into C plus M, this is a formula, plus 1 minus X into C plus 2M, this is a formula. Is it not? The hit ratio is 90%. 90% के लिए देखिएगा 50 plus 400, 450
माइक्रोसेकेंड प्लस 0.1 इंटू 400 प्लस 400 800 प्लस 50 मतलब 850। इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। यस, द आंसर इज बी, बिल्कुल सही जवाब। इफ यू सिंप्लीफाई दैट यू विल गेट 490 माइक्रोसेकेंड, दैट इज द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका बताइए प्लीज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। 1 megabyte memory storage in form of bytes is equal to how much? 1 MB, 1 megabytes। चलिए यहां पर मैं आपको लिख दूंगा 1 किलोबाइट इज 1024, तो 1 KB इंटू 1 KB इज 1 MB, मतलब 1024 इंटू 1024, 1024 स्क्वायर। बिल्कुल सही जवाब, so therefore करेक्ट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट। हाँ ये देखिए, दिस इज नॉट अगेन गेट, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, देखेंगे कौन रिप्लाई करता है। कौन, रीड इट एंड टेल मी द आंसर। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस। दिस इज नॉट फ्रॉम गेट, ये गेट का क्वेश्चन नहीं है। इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस दैट आर टर्मिनेटेड, जो प्रोसेसेस आपने टर्मिनेट किया हो फॉर सम रीजन मस्ट हैव इट्स टास्क स्ट्रक्चर, मतलब प्रोसेस टेबल। टास्क स्ट्रक्चर का मतलब प्रोसेस टेबल। टास्क स्ट्रक्चर इन द प्रोसेस टेबल आर रेफर्ड टू एज। वैसे प्रोसेसेस जो आप टर्मिनेट किए हैं लेकिन उसके एंट्रीज अगर प्रोसेस टेबल में हो तो वो प्रोसेसेस को आप क्या बोलेंगे? ज़ॉम्बी बोलेंगे। एक टर्म है ज़ॉम्बी, ज़ॉम्बी प्रोसेसेस। तो बिल्कुल सही ऑप्शन इज ए, एज मेनी पीपल हैव सेड। ये भी बहुत सिंपल है, रिपीटेशन क्वेश्चन है। इनफैक्ट इज रिपीटेटिव क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट सफर्स फ्रॉम बेलाडीज एनोमली? ऑलरेडी हमने पहले जवाब दिया, फिर से एक बार पूछा गया है 2019 में, तो देयरफॉर ऑप्शन इज सी, वेरी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये दिस इज द एंड ऑफ बेसिकली द ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। तो मेरी आपको एडवाइस ये है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि एक यूट्यूब PW प्लेटफॉर्म का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसमें हमने गेट 2023 के लिए क्रैश कोर्स बैच के लिए एक PYQ सीरीज लेके आए थे। PYQ सीरीज जहां पर हमने इंपॉर्टेंट गेट क्वेश्चन डिस्कस किए थे हर सब्जेक्ट के, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एल्गोरिथम्स है, अदर सब्जेक्ट्स के। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक सीरीज है, 2-2.5 घंटे का लेक्चर है, जहां पर वी हैव सॉल्व मेनी PYQ। सो आई वुड एडवाइज यू एट योर टाइम ऑफ लीजर, you can watch that video also. You will find other difficult, more tougher questions of GATE PYQ. तो वो भी आप एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एल्गोरिथम्स का। नेक्स्ट विल स्टार्ट क्वेश्चन फ्रॉम एल्गोरिथम्स। चलिए पहले इसमें आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा, थोड़ा कंपटीशन यहाँ पर ज्यादा होगा टाइम, तो फर्स्ट आप वर्कआउट कीजिए क्वेश्चन। ये गेट क्वेश्चन है। यू हैव नॉट डन अर्लियर और इवन इफ यू हैव डन, my humble request is please work out again and tell me what is the answer. This question is based on Huffman coding. अगर आपने टॉपिक पढ़ा है Huffman coding का, तो this question is based on Huffman coding. बोलिए आंसर क्या है इसका। There are 5 messages P, Q, R, S, T. Their respective frequencies or probabilities are given. Right? एक stream of characters है, 100 characters है। तो अगर आप हफमन कोडिंग से उसे एनकोड करोगे तो उसकी एक्सपेक्टेड लेंथ, एवरेज लेंथ क्या होगी? ऑप्शंस है। तो हम इसे कैसे वर्कआउट करेंगे, या जिन्हें पता हो एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस प्लीज वर्कआउट एंड टेल मी। रिया, ओके, आई विल टेल यू व्हाट इज ऑर्फन प्रोसेस। ऑर्फन प्रोसेस आर दोज प्रोसेसेस हुज पेरेंट्स हैव बीन किल्ड बिफोर चाइल्ड, राइट। ऑर्फन, जो वर्ड ऑर्फन है इंग्लिश में, उसे हम यतीम जो बोलते हैं, हिंदी में या उर्दू में यतीम कहते हैं। मतलब वो प्रोसेसेस जिनके पेरेंट प्रोसेसेस एग्जिस्ट ना करते हों, वो प्रोसेसेस को हम ऑर्फन बोलते हैं। श्रिया, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑर्फन प्रोसेस। व्हेन वी क्रिएट अ प्रोसेस यूजिंग फोर्क मैकेनिज्म, ठीक है, फोर्क मैकेनिज्म, तो हमारे पास 2 प्रोसेस होते हैं, पेरेंट एंड चाइल्ड। सो इफ पेरेंट प्रोसेस गेट किल्ड बिफोर चाइल्ड, चाइल्ड इज अलाइव, पेरेंट इज डेड, such child processes are called orphan process. Okay, चलिए इसका आंसर क्या है बच्चों, बताइए प्लीज वर्कआउट। व्हाट इज आंसर फॉर दिस? एल्गोरिथम्स 2022 का है, लेटेस्ट पेपर का है क्वेश्चन, एंड ये गेट क्वेश्चन भी है। एनीबडी, व्हाट इज आंसर फॉर दिस?
Okay, Maurya, Shubham Maurya is saying option A. I would like to wait for another student to answer, then I will solve. I will solve this question. So that you should know, because Huffman coding is one of the important topic from examination perspective. इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पर workout करूँ for those who do not know. I will fully work out this problem, don't worry. But other people, let me wait. Priya, Nishu Kumar, Shyam, please work out. Rishi Sharma. ठीक है, let us start working out. So next page पर मैं यहाँ पर workout करूँगा. We have 5 messages. Let us write here. So messages are P, Q, R, S, T. Let's say their frequencies are given as 0.22, 0.34, 0.22, 0.34, 0.17, 0.19, 0.17, 0.19 और फिर लास्ट है 0.08, 0.08. ये फ्रीक्वेंसीज है. तो सबसे पहले हमें हफमन कोड एनकोड डिकोड ट्री कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. उसका प्रोसीजर ये है कि यू आर गोइंग टू टेक और कंबाइन द फ्रीक्वेंसीज और द मैसेजेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज. मतलब हमारे पास पांच मैसेजेस है. आई विल पुट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट है 0.08, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है 0.17, फिर है 0.19, फिर उसके बाद है 0.22, फिर है 0.34. ठीक है. तो दिस इज एस टी है, दिस इज पी क्यू आर है, दिस इज टी, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू. तो यू आर गोइंग टू टेक द टू लीस्ट 0.08, 0.17. सो इसकी वैल्यू बनेगी, रूट की वैल्यू बनेगी 0.25. देन यू आर गोइंग टू ऐड 0.25 टू द लिस्ट. 0.25, वेरी करेक्ट. हाँ ठीक है शुभम, यू कैन डू लाइक दैट ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. वेरी गुड. देन यू कैन टेक द नेक्स्ट टू स्मॉलेस्ट. देखिएगा नेक्स्ट टू स्मॉलेस्ट है 0.19, 0.22, 0.25. मतलब ये दो स्मॉलेस्ट है, ये दोनों को कंबाइन किया जाएगा. So this will give you a value, how much? 9, 10, 11, 2, 3, 4, 0.41. 0.41 होगा, right? 0.19 and 0.22. So 9, 10, 11, 2, 3, 4, correct. फिर उसके बाद देखिएगा दो स्मॉलेस्ट कौन से हो गए? 0.25, 0.34. So हम 0.34 को यहाँ पर ला लेंगे, 0.34, और दोनों को कंबाइन कर लेंगे. ये बनेगी वैल्यू 5 + 4 9 और 0.59, राइट. ये वैल्यू हमने यहां पर कॉपी कर ली. 0.41 लेफ्ट पे आ जाएगा, 0.41. ठीक है. तो दिस हैज 2 चिल्ड्रन ऑलरेडी, 0.19 एंड 0.22. तो दिस इज टी, दिस इज पी. तो अब हम यहां से इसे रिमूव कर देंगे. फिर दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे, सो दिस विल बी एब्सोल्युटली 1.0, वही दिया गया था, राइट. सो दीज आर माई मैसेजेस. सो 0.34 वाज बेसिकली पी क्यू. सो आई हैव पी क्यू आर टी एस. 0.19 इज पी क्यू आर एस. दिस इज एस, इज एस. सो पी क्यू आर एस टी. ठीक है. दिस इज द ट्री. So we follow a convention. Left branches you can mark 0, right branches you can mark 1. So therefore this is 0, this is 1, this is 0, this is 1, this is 0, this is right. So you have to calculate average number of characters per message. उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. P का कोड देखिए आप क्या है. P is nothing but 0, 1. So therefore it is using 2 characters. Q, the code of Q is where is Q? 1, 1. So this is also 2. Then R is 101, 101 मतलब 3. S is nothing but 00 मतलब 2. PQRS. Then T is 100, so this is 3. So average number of characters, average number of bits, you can say average number of bits per character.
will be nothing but given by sigma di into qi. So starting from the first one, P2 into its frequency 0.22, P. Q, its length is 2 into its frequency 0.34, PQ. R की length है 3 into its frequency 0.17. Then plus PQRS T, PQRS, S is 2 into its frequency 0.19. Then lastly T, its length is 3 into 0.08. This will give you average number of bits per character. Yes, very good. Why not? PIT student, you can definitely get a job. So this is the thing, right? So when you calculate the average, what is the sum you are going to get? Can anybody tell me what is the value of this? If you simplify this summation, this value, what is it? I think this will come out to 2.25. If you simplify, this will come out to 2.25. 2.25, very correct. So he is saying in the question, if you observe, for 100 characters, what will be the length? So therefore, it will be nothing but 100 into 2.25, which is equal to 225. So that is our answer. So option A is correct. Option A is correct. Okay? So this is the method of this question. चलिए next question पे आएंगे. इसका आंसर बताइएगा please. What is the answer for this? Recursive function है. इसका time complexity will be what? Anybody? Recursive function है. इसकी time complexity क्या होगी? Rishi Sharma is saying option D. What about other people? Come on. What about other people? Riya, Sham. VIT student, you are saying you are in CSC branch. Can I get a job? Yes, you can definitely get a job in PSU if you prepare well for GATE. Absolutely correct. बिल्कुल सही है. Oh, very good. Anil Nair classes. So what are you doing, Anil Nair, nowadays after 20 years? Anil Nair, one of the participants here in the class, is saying that he was my student 20 years back, 2003, 2004. So my best wishes to you, seeing me after 20 years. I do remember I used to take classes in Methodist. I remember very well. Very nice to see you, Anil. So what are you doing nowadays? You're saying Anil Nair classes, so I'm believing that you are also basically a teacher and doing some service. Very good. Satya Sahil Malik, answer is D. Very correct. Very correct. Rishi Sharma, so answer is D. Absolutely correct. तो यहाँ पर हमें first recurrence बनाना पड़ेगा. If I say time complexity is given by the function t of n, if you observe, if n is less than or equal to 2, the answer is constant C for n less than or equal to 2. For n less than or equal to 2, we have to draft the equation like this. And time taken is constant. Otherwise, square root of n, so therefore it becomes t of root n plus, adding this will take constant time and comparison will take constant time, another constant a for n greater than 2. So here I say a and c are constants. This will be my recurrence. So अगर आप solve करोगे recurrence को, if you try to work out or solve the recurrence, you can get the answer very simply. So here I will try to work out. For those who don't know, t of n is equal to t of n power half plus constant a, equation 1. If you find the value of t of n power half, it will become t of n power 1 by 4 plus a, equation 2. If you substitute this value back in equation 1, you will write this as t of n power 1 by 2 square plus 2a. A plus a become 2a. This will become my equation. Okay? So if you take this recursion to a depth k,
where it will written as n power 1 by 2 power k plus ka, equation 4, such that यहां पर हम लिखेंगे n power 1 by 2 power k should become equal to 2 using the initial condition. तो यहां अगर आप k की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, दिस विल बी नथिंग बट log of log n, k की वैल्यू जो होगी log of log n. अगर ये वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो our t of n will become constant c plus a into log n. ये हमारा फाइनल इवैल्यूएशन होगा इक्वेशन का, हमारा इक्वेशन का फाइनल इवैल्यूएशन ये होगा, राइट. So therefore the correct answer is D, as many people have suggested. Option is D, log n. चलिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल. ऋषि शर्मा, no, 2 power k and generate a new recurrence as per, हाँ you can do it like that. K is log n, so log n आएगा आंसर, बिल्कुल सही. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, इसका आंसर बता दीजिएगा प्लीज. वेरी डायरेक्ट प्रॉब्लम, इसका आंसर बताइए. दिस इज 2017 का क्वेश्चन है. इट इज फॉर वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर, उसका रिकरेंस है ये. तो इसका आंसर क्या होगा? कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज वर्क आउट. यस, क्या कोई लिख के चैट बॉक्स में मुझे बताएगा दिस रिकरेंस इज फॉर विच प्रॉब्लम ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर? लेट मी सी. ये भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है. हाँ शुभम मौर्य, यू आर राइट, आप मास्टर थ्योरम से करोगे, लेकिन आपको ये पूछ रहा हूं मैं कि ये जो रिकरेंस है यहां पर, दिस रिकरेंस इज एक्चुअली फॉर विच प्रॉब्लम, फॉर सॉल्विंग विच प्रॉब्लम? श्रिया, इट इज नॉट स्ट्राजन, आई विल टेल यू. दिस इज डिवाइड एंड कॉन्कर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मेथड. मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड एंड कॉन्कर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मेथड के लिए ये रिकरेंस होगा 80n/2. 70n/2 बनेगा स्ट्राजन्स के लिए, ठीक है ना. स्ट्राजन्स के लिए होगा 70n/2. डिवाइड एंड कॉन्कर के लिए मेथड के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 80n/2 प्लस qn. तो अगर आप मास्टर मेथड से इसे सॉल्व करोगे, इफ यू ट्राई टू वर्कआउट यूजिंग मास्टर मेथड से वर्कआउट करोगे, तो केस 1 से केस 1 एप्लीकेबिलिटी होगी. आई वुड से दैट qn, द गिवन फंक्शन qn इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ n पावर log 8 to base 2 minus epsilon. This is perfectly true. ये perfectly true है. log 8 to base 2 is 3. So n cube minus epsilon से perfectly satisfy होगा ये. So therefore by case 1 we say t of n is order of n power log, order या theta बोलोगे आप, n power log 8 to base 2 n cube. So therefore the correct answer is n cube. Option C, n cube सही है, बिल्कुल सही. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. चलिए बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. एल्गोरिथम्स के बच्चों क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, एब्सोल्युटली यू डोंट हैव टू वरी अबाउट. थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स थोड़ा स्ट्रांग पढ़ लीजिए आप. गेट लेवल से काफी लो लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं NIC में, तो यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम फॉर सॉल्विंग एल्गोरिथम क्वेश्चन. चलिए, एन एल्गोरिथम इज मेड अप ऑफ 2 मॉड्यूल्स M1 एंड M2. इफ ऑर्डर ऑफ M1 इज f of n एंड ऑर्डर ऑफ M2 इज g of n, देन द ऑर्डर ऑफ द एल्गोरिथम क्या होगा? बहुत सिंपल है, राइट. देखिएगा, अगर f of n is n और g of n is n स्क्वायर, जब आप दोनों को ऐड करोगे f of n प्लस g of n प्लस n स्क्वायर क्या होगा? फाइनल ऑर्डर बनेगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, मतलब जो भी मैक्सिमम है, जो भी मैक्सिमम है. तो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज मैक्सिमम ऑफ f of n एंड g of n. तो बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. कार्टून चैनल वॉइस जर्लिंग, आई डिडंट गेट यू. कार्टून चैनल, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. चलिए इसका आंसर बता दीजिएगा प्लीज. एक बार रीड कर लीजिए, इसका ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे है. बिफोर आई शो यू द नेक्स्ट पेज, व्हाट इज आंसर फॉर, एक बार रीड कर लीजिए क्वेश्चन. प्लीज रीड द क्वेश्चन वंस. ठीक है, प्राइम नंबर कंप्यूटेशन है. चेक वेदर ए गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट. I going from 2 to square root of n. If n mod I is equal to 0, immediately say not prime. Otherwise, if the loop repeat maximum for root n time, then basically we are saying return 1. ठीक है. Let t of n denote the number of time the for loop is executed by the program on input n. Which of the following is true? बहुत interesting gate question है, right? चलिए अब ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं.
बताइएगा व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको यहां पर डिटरमिन ये करना है व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम द लूप रिपीट्स एंड व्हाट इज द मिनिमम टाइम द लूप रिपीट्स, ये बताइए। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लूप रिपीट्स एंड व्हाट इज द मिनिमम टाइम द लूप रिपीट्स। मैक्सिमम टाइम लूप रिपीट इज √n, √n, बिल्कुल सही। एंड द मिनिमम टाइम द लूप रिपीट इज 1 टाइम, मे बी कांस्टेंट 1, कांस्टेंट टाइम। फर्स्ट टाइम n mod i इज इक्वल टू 0 एक बार अगर होगा तो मिनिमम टाइम होगा 1, मैक्सिमम टाइम होगा n। तो ये बेसिस पर आपको डिसाइड करना है। सो इट इज मैक्सिमम इज ऑर्डर ऑफ √n, मिनिमम विल बी ओमेगा ऑफ n, बिकॉज 1 cannot be taken as order of 1, right? And then so minimum, that means the algorithm will minimum run for 1 time, so it can be more than 1. So I have to definitely take it as omega of 1. Omega means basically the lower bound, maximum means the upper bound. So upper bound time is √n, maximum time, number of time the loop repeat is n time, √n. Minimum time it runs is 1 time. So therefore based on that the correct option, as people said, is option B, order of √n and omega of 1. ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर बता दीजिएगा प्लीज। ये जरा ट्रिकी क्वेश्चन है, आई वॉन्ट यू टू बी केयरफुल इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन। कम ऑन, आंसर फॉर दिस। थोड़ा ट्रिकी है बच्चों, एक्चुअली नहीं पूछा जाना चाहिए ये क्वेश्चन, लेकिन पूछा गया है, लेकिन थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। या श्रिया, यू ऑब्जर्व वन थिंग, श्याम यू ऑब्जर्व वन थिंग, ऋषि प्लीज ऑब्जर्व वन थिंग। एज पर द कॉन्सेप्ट, इब्राहिम मोहम्मद बाकिर, एज पर द कॉन्सेप्ट, एज पर द लिटरेचर, यहां पर मेरा डिस्कशन गौर कीजिए। एज पर द लिटरेचर, द एक्चुअल एल्गोरिथम यूज फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ फ्लॉयड वार्शल्स ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, एक्चुअल एल्गोरिथम फॉर सॉल्विंग ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड फ्लॉयड वार्शल्स एल्गोरिथम। ये दोनों को मिलाकर है, फ्लॉयड एक पर्सन है, वार्शल एक पर्सन है, तो फ्लॉयड वार्शल्स एल्गोरिथम ये एक एल्गोरिथम है। लेकिन टिपिकलिटी यहां पर यह है कि दोनों का नाम फ्लॉयड और वार्शल दो ऑप्शन में दिए गए हैं। यहां पे फ्लॉयड दिया गया है, यहां पर वार्शल दिया गया है। अब एमसीक्यू क्वेश्चन में आप बी और डी स्पेसिफाई नहीं करोगे, हाँ, अगर एमएसक्यू होता तो शायद कुछ और बात होती, लेकिन यहां पर दोनों फ्लॉयड और वार्शल अलग अलग दिया गया है, अलग अलग। तो हम फ्लॉयड भी सेलेक्ट नहीं कर सकते, वार्शल भी इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहां पर टिपिकलिटी ये है, ट्रिक ये है कि बच्चों गौर कीजिए, ये जो डाइकेस्ट्राज एल्गोरिथम है, ट्रेडिशनली डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम इज यूज फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, जो ग्रीडी बेस्ड है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। गौर कीजिएगा बच्चों, प्लीज फॉलो व्हाट आई एम सेइंग। So Dijkstra algorithm is actually used for solving the problem of single source shortest path, greedy based. लेकिन आपने पढ़ा होगा या मेरा वीडियो वॉच किया होगा, if so, the Dijkstra single source shortest path algorithm can be used for solving all pair shortest path also. Dijkstra single source shortest path algorithm can also be used for solving the problem of all pair shortest path by applying it n times, by applying number of times equal to number of vertices. अगर आपके पास नंबर ऑफ वर्टिसेस n हो तो आपको डाइकेस्ट्रा का n टाइम अगर आप वर्कआउट करोगे या अप्लाई करोगे एल्गोरिथम, आई कैन गेट द सॉल्यूशन टू ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। सो बच्चों यहां पर ये बताना चाह रहा हूं कि डाइकेस्ट्राज एल्गोरिथम कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बाय अप्लाइंग डाइकेस्ट्राज एल्गोरिथम n टाइम एवरी टाइम चेंजिंग द सोर्स वर्टेक्स। तो डाइकेस्ट्रा भी सॉल्व कर सकते हो आप। तो डाइकेस्ट्रा दिया गया है, तो बेस्ड ऑन दैट वी कैन सेलेक्ट ऑप्शन ए, नॉट बी एंड डी। We can select option A because B and D are partially correct, but A is perfectly correct. So I hope you are understanding my point, boys and girls. Okay, so you have to be slightly tricky here for this question. ठीक है ना? तो जनरली है फ्लॉयड वार्शल्स, लेकिन फ्लॉयड वार्शल हमें सेलेक्ट नहीं कर सक रहे हैं हम ऑप्शन बी एंड डी में, तो डाइकेस्ट्रा से वर्क कर सकते हैं हम। वी कैन गेट द करेक्ट सोल्यूशन यू कैन डाइकेस्ट्रा ऑल्सो, so therefore we will go for डाइकेस्ट्रा फॉर दिस। ठीक है, हाँ, अगर एक ही ऑप्शन में फ्लॉयड वार्शल दिया जाता तो हम जरूर फ्लॉयड वार्शल सेलेक्ट करते, ठीक है ना, एज एन एमसीक्यू। तो बी केयरफुल विद सच क्वेश्चंस। ठीक है, गेट में तो नहीं है ऐसा दिया गया कभी, लेकिन ऐसा आ सकता है क्वेश्चन।
ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसका अंदर ये रिपीटेशन क्वेश्चन है, रिपीटेशन है एग्जैक्टली, हमने ऑलरेडी वर्क किया था, रिपीट हुआ क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन, तो वही क्वेश्चन जो हमने पहले देखा था वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है। नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए, ये भी रिपीट है, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब हमने ऑलरेडी वर्कआउट किया, शाजन का ये भी रिपीट हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। हाँ, ये इसका आंसर बताइए प्लीज, इसका आंसर बताइए। कई ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, विच प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय विच स्ट्रैटेजी और विच स्ट्रैटेजी इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग विच प्रॉब्लम, लाइक दैट, सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दिस, कम ऑन, वर्कआउट फॉर दिस। Yes, very simple. Which of the following standard algorithm is not dynamic programming based? Bellman-Ford algorithm used for single source shortest path is absolutely dynamic programming, TP. Floyd-Warshall's algorithm for all path shortest path अभी हमने डिस्कस किया, this is based on dynamic programming. ठीक है ना? 0-1 knapsack is solved by dynamic programming and fractional knapsack is solved by greedy method. Prim's algorithm, this is based on greedy method, ये greedy है, तो therefore आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, इसका भी आंसर बताइए, बहुत सिंपल डायरेक्ट प्रॉब्लम है, कडाने एल्गोरिथम। एक आपको शायद अगर आपने रीड ना किया हो, लेकिन यहां पर मैं इंफॉर्मेशन के लिए आपको दे दूं, बात बता दूं, कडाने एल्गोरिथम इज बेसिकली यूज फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमम सम सब अरे, मैक्सिमम सम सब अरे, MSS बोलते हैं। मैक्सिमम सब अरे का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास कोई एक अरे हो जिसके एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल 0, 8, -2, 4, 12, 7, ऐसे, ये अरे है, सब अरे। यस, यू हैव नॉट रेड, आप पढ़ सकते हो इसे, बाद में आप इंटरनेट पे देखो, गूगल करके देखिएगा व्हाट इज मैक्सिमम सम सब अरे। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम ऑल्सो। तो एक सब अरे, सबसेट अरे जिसका मैक्सिमम सम हो, अगर ये 2 नंबर्स लेंगे इसका सम होगा 8, अगर ये 3 नंबर्स का लेंगे आप, इसका सम होगा 6, ठीक है। उसी तरह ये 3 एलिमेंट्स लेंगे, 12 - 10 10 होगा। तो व्हाट इज दैट मैक्सिमम सब अरे, व्हाट इज दैट सब अरे इन द गिवन अरे हुज सम इज मैक्सिमम, ये है मैक्सिमम सम सब अरे। तो दिस प्रॉब्लम कैन वेल बी सॉल्व्ड बाय एन एल्गोरिथम कॉल्ड कडाने एल्गोरिथम, कडाने एल्गोरिथम। सब अरे है, नॉट सबसीक्वेंस। सब अरे मतलब सबसेट अरे, सबसेट, आप कोई एक एलिमेंट ये नहीं लिख रहे होगे, आप यहां नहीं लोगे, यहां नहीं, सबसेट होना, सब अरे होना, कंटिन्यूअस होना। तो मे बी फॉर एग्जांपल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी लाइक दिस, इज द मैक्सिमम सम सब अरे, ठीक है। सो दैट इज कडानेज एल्गोरिथम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए प्लीज, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन। Let G be a graph with n vertices and m edges. What is the tightest upper bound on the running time of depth first search on graph G? Assume the graph is represented by adjacency matrix. यहाँ पर दिया गया है कि the graph is represented by matrix. The size of the matrix will be n by n. So the complexity of this will always be theta of n square. Whenever you are representing the graph by matrix, the complexity will be order of n square. So therefore, option will be C. Option will be, ठीक है, Sham, it will not be B, Sobham, Maurya, it will not be B, option is C. Very correct. Next question. Come on, tell me the answer for this. This is also a well-known problem. Come on, read and tell me the answer for this. Well-known recurrence. Answer for this, and you also have to tell me this recurrence arises for which problem? Which problem? That also you should know, because sometime they can ask you the question like that. This recurrence will be used for solving which problem? Come on, boys and girls. पहले ये बताइए मुझे, कौन सा प्रॉब्लम? वेरी गुड ऋषि शर्मा। दिस रिकरेंस अराइजेस फॉर द प्रॉब्लम ऑफ मर्ज सॉर्ट एंड ऑल्सो द बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट, दोनों के लिए होगा। बेस्ट केस ऑफ क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट इन जनरल। तो 2Tn/2 प्लस ऑर्डर ऑफ n, अगर आप मास्टर मेथड से सॉल्व करो या फिर बैक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, द आंसर फॉर दिस विल कम आउट टू बी थीटा ऑफ n log n. So answer is B, as people have said. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, आंसर बोलिए इसका प्लीज।
Read the choices carefully. Such questions are important. Both are in option. Which one to choose? Which? What is the other option? Theta would be better. Theta would be better because upper bound and lower bound both are same. So this is a much better choice. Rishi Sharma, this will be a much better choice. Tell me the answer for this. Tell me the answer for this. Read the options carefully. Yes. कौन से सिचुएशन पर और किस लिए आप एडजेसेंसी लिस्ट प्रेफर करोगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स पर फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्राफ? देखिए ग्राफ के दो रिप्रेजेंटेशन है, एडजेसेंसी लिस्ट है और एडजेसेंसी मैट्रिक्स है. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट ओवर इन एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन? स्पेस इज डेफिनेटली सेफ फॉर स्पार्स ग्राफ. बिल्कुल सही जवाब. Deleting a vertex in a list is easily performed than in comparison to arrays or matrix. So therefore, this is also option. Adding a vertex in adjacency list become very easy because it's a linked list. So therefore, this is correct. So all of the options are correct. So therefore, आपका सही option होगा option D. सही जवाब है option D. Next. चलिए इसका आंसर दीजिएगा प्लीज. दिस अ गेट क्वेश्चन. ये गेट क्वेश्चन है. वर्कआउट करके बोलिए इसका आंसर क्या है बॉयज एंड गर्ल्स. Yes. Very correct. Sal Malik. Check. Shubham Maurya. No. Many people are giving wrong answers. Shubham Maurya, please check. Sayantan Dinda, please check your answer. Sriya, please check. No. Be careful. Rishi Sharma is correct. Be careful here. We are not testing the value of I. Here, if it is I less than or equal to n, then it is order of n. But here we are testing the value of s. Look at that, boys and girls. Initially I is 1, s is 1, 1 less than or equal to n. Yes, I become 2. S plus 2, 1 plus 2. Second iteration, s is less than or equal to n. 1 plus 2 less than or equal to n. Yes. Third iteration, s will be 1 plus 2 plus 3 less than or equal to n. Yes. So it keeps on. So that means, listen, as long as the value of s is 1 plus 2 plus 3 plus so on plus k is less than or equal to n, where k indicate the iteration number, the last iteration number for which it may repeat. So that means the time complexity of this is order of k, where k indicate the last iteration number. K is iteration number. First time k is 1, second time k is 1 plus k is 2, third time k is 3, fourth time k is 4. So as long as the value of s 1 plus 2 plus 3 up to k is less than or equal to n, we repeat. So last time हम जब repeat करेंगे when this value is equal to n, that means 1 plus 2 plus 3 plus so on plus k should be equal to n. ये होगा last हमारा iteration. This is nothing but k into k plus 1 by 2 equal to n. So k square plus k is equal to 2n. हमें k की value determine करनी है यहाँ से. तो आपको कोई फुल फ्लेज इक्वेशन सिंप्लीफाई करना नहीं है. असिम्प्टोटिक्स में यू कैन टेक हाईएस्ट ऑर्डर टर्म k स्क्वायर इज ऑलमोस्ट 10. so therefore k is equal to root n. Order of k, order of root n. So this is root n complexity. So therefore the correct option is D. Correct option is D, order of root n. Be careful, ये previous gate question है. Okay, so those who went wrong, please check where you have gone wrong. हाँ, अगर बच्चों यहां पर i की वैल्यू होती, अगर यहां पर i देते i लेस देन और इक्वल टू n, then it become order of n. यहां पर s की वैल्यू i है. So when it is s, it is less than n. So therefore the time complexity will become less than n, which is root n. That's why it is coming out to be root n. I hope it is clear. Chalo, next.
प्लीज वर्कआउट, रीड इट। इसका क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर आ रहा है, ये रीड कर दीजिए। रीड द क्वेश्चन। Very simple. This is the question on 0 on knapsack. Please observe this 0 on knapsack. Using dynamic programming. Knapsack capacity is W. Weights and profits of 5 items are given. The knapsack capacity W should be is given and to be 8. W is 8. The given 0 on knapsack problem is solved using dynamic programming. Which of the following will be the maximum earned profit? So please see the data. एक बार डेटा देखिएगा और आप पहले आप अपने से बताइए आंसर। मैं हिंट ये दे रहा हूं कि प्लीज डोंट ट्राई टू अप्लाई डायनामिक प्रोग्रामिंग का जो इक्वेशंस अगर आप वर्क करोगे तो आप काफी टाइम कंज्यूम कर लोगे। डेटा बहुत सिंपल है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट डेटा है, तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई योर कॉमन सेंस, कॉमन नॉलेज एंड गेट द आंसर। चलिए आंसर बताइए इसका। knapsack capacity W is equal to 8. This given to us. तो ये बेसिस पर आप डेटा सिलेक्ट करके मुझे बताइए क्या आंसर होना चाहिए। Kindly remember this 0 on knapsack. That means you cannot break the object. Either you place the object, you don't place it. 0 on knapsack है। 19 कैसे होगा बताइएगा प्लीज। Yes, 1 2 5, very correct. 1 2 5, 1 2 5, 1 2 4 I think, 1 2 4 I think. देखिएगा total weight is total weight in the knapsack. I mean knapsack capacity rate. If I take only this object, I'll get profit of 18. 18 तो आ सकता है। क्या 18 से हो सकता है, बढ़ के हो सकता है? अदर ऑप्शंस अगर आप लेंगे 5 + 4 ये दोनों का भी मैक्सिमम हो सकता था, लेकिन knapsack कैपेसिटी बढ़ जाएगी, सो यू कैनॉट कंसीडर दीज टू, इज इट नॉट? इसके साथ यू कैनॉट टेक एनी अदर ऑब्जेक्ट्स, तो ये दोनों के रूल आउट हो गए। नाउ यू कैन टेक दीज 3, 4 + 2 + 1 7 होगा। इसका प्रॉफिट कितना बनेगा? 17 बनेगा। लेकिन अगर आप ये ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करोगे 5 2 7 and 1 8, इसका प्रॉफिट 11 + 5 16, 16 + 3 19, so 19 is greater than 18, so therefore 1 2 and 4 will give you 19. This is the correct answer, as simple as that. So you don't have to traditionally work out by applying dynamic programming recurrences, right? Directly you can take the answer because the data set is very small, so therefore the correct answer is 19. Very correct. चलिए next question, इसका आंसर बता दीजिएगा प्लीज। Tell me the answer for this question. Yes. Knapsack problem belongs to which of the following cases? Is it an optimization problem or NP complete problem or linear solution sort? Linear solution and sorting तो option rule out हो गए, optimization और NP complete, so optimization because it is going to maximize the profit, so therefore the correct answer is A. The correct answer is A, optimization problem. Next, इसका भी आंसर बताइए। नेक्स्ट, these are all very direct questions. एल्गोरिथम के तो बहुत सिंपल है। बोलिए इसका आंसर क्या है? द रनिंग टाइम ऑफ क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम डिपेंड्स हेविली ऑन व्हाट? जो परफॉर्मेंस है क्विकसॉर्ट, उसका जो परफॉर्मेंस होगा क्विकसॉर्ट का विल डिपेंड इनवेरिएबली ऑन व्हाट? इट विल डिपेंड ऑन द सिलेक्शन ऑफ पाइवोट एलिमेंट। अगर आपका मिडिल में फिक्स हो रहा है तो बेस्ट केस होगा, अगर पाइवोट एलिमेंट एंड या बिगिनिंग में फिक्स हो रहा है तो इट विल हैव बेस्ट वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, तो देयरफॉर एसेंशियली इट विल डिपेंड ऑन पाइवोट। सो बिल्कुल सही जवाब, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बताइए व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सा मेट्रिक है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, कौन सा मेट्रिक है दैट इज गोइंग टू गवर्न द परफॉर्मेंस ऑफ द एल्गोरिथम? So main efficiency of an algorithm is governed by time and space complexity, so therefore the correct answer is C, undoubtedly C.
चलिए नेक्स्ट, बताइए इसका आंसर। ये भी दिस बेस्ड ऑन मास्टर मेथड, यू कैन वर्क आउट बेस्ड ऑन मास्टर मेथड एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर फॉर दिस बॉयज एंड गर्ल्स। मास्टर मेथड अप्लाई करके बोलिए इसका आंसर क्या है। यस, तो n इज, हम चेक करेंगे केसेस, n इज इट ऑर्डर ऑफ n पावर log of 1 to base 2, log of a is here 1, so log of 1 to base 2 क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। so this is 1 minus epsilon, this is false because epsilon is greater than 0. क्या नहीं से n is it theta of n power 0 into log n power k, ये केस 2 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या नहीं से केस 3 होगा, n is it omega of n power 0 plus epsilon, हाँ ये अप्लाई होगा, केस 3 अप्लाई होगा। सो बाई केस 3 आई से n is theta of f of n which is n, so therefore order of n f of n, so option B, as many people have said, correct option is B. चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए। what is the answer for this? What is the basic objective or purpose of BIGO? The concept of BIGO notation. Answer for this. Be careful, Rishi Sharma, Sahil Malik, be careful. Priya is correct. Shyam, be careful. BIGO notation does not determine the maximum size of a problem is not determined by BIGO. Maximum time is determined. Upper bound is determined. Upper bound. So it's saying maximum size of a problem that can be solved in a given amount of time. No, maximum size of the problem नहीं. Size of the problem determine नहीं करोगे आप BIGO से. Maximum time determine करोगे. So it can be used to decide the best algorithm that solves a given problem. It is the lower bound, ये नहीं होगा. So both A and B भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. It can be used to decide the best algorithm. Given two algorithms, you can find their time complexities and represent through BIGO notation, and then through BIGO you can determine which is the best among both the options. So therefore option A is correct. Okay, option A would be the correct option for this. Next, ये question interesting है. Please work out. This is not 10k, I will just write it 10 power k. This is n square. This is n square. This is 10 n into log n to base 10. See, this is the problem to be interpreted. There is some package, right, database, which has 10 power k records. There are two packages or two algorithms, this database. Algorithm A or package A takes a time of 0.0001 n square, and the time taken for this is 10 into n into log n to base 10. This is the given information. Package A and package B. So he's saying actually this is order of n square, this is order of n log n. So package B is better than package A in general, but like in यहाँ पर because of this 0.001 n square, that value is very small. So for some values of n, this is going to dominate this. So he say what is that smallest value of k? Smallest value of k for which package B starts performing better than package A. चलिए workout करेंगे. So what essentially you want is, you want the value 10 into n into log n.
should be becoming less than 0.0001 n square. The value of n is 10 power k, so you write 10 power k into log of 10 power k to base 10 less than 10 power minus 4 into 10 power 2k. So this 10 power k and 10 power k cancels once. This is nothing but k, right? K into 10. K into 10 is less than 10 power k divided by 10 power 4. So eventually यहाँ पर हम लिख लेंगे. So finally यहाँ पर हम लिखेंगे k should be less than 10 power k divided by 10 power 5. So you need to solve the smallest value of k for which this is satisfied. अगर आप k की वैल्यू 5 लोगे तो 5 is less than 1 नहीं होगा. k की वैल्यू अगर 6 लोगे 10 power 6 by 10 power 5 10. 6 is less than 10. So 6 is less than 10 for k is equal to 6. So therefore your answer is k is equal to 6. मतलब answer C is correct. C is correct. ठीक है? As many people have said correctly, answer is 6. चलिए next question. बताइए इसका आंसर. ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है. What is the type of algorithm used in solving n queens problem, 4 queens problem? Anybody? Yes, very correct. N queens problem is solved by backtracking. So therefore, backtracking is the correct answer. ठीक है? चलिए next. Answer बताइए इसका. Stability of a sort. The question is with regard to stability. Stable sorting. You know the meaning of stable sort. The relative order of non-distinct elements should be maintained. That property is called stability of a sort. Selection sort is stable. Quick sort is not stable. So therefore, first one is true, second one is false. So therefore, answer is C. ठीक है? Answer is C. Next question. Answer बताइए please. Slowest matlab means takes more time. What will be the answer for this? Quick sort, best time is n log n. Merge sort, always n log n. Shell sort can be basically like linear. Like in bubble sort, if you don't consider basically that you are taking an additional variable to check whether a list is already sorted or not. So that is going to take maximum time, always order of n square. Sorry. The option is D, bubble sort. ठीक है? Next. इसका आंसर बताइए. What is the answer for this? Rishi Sharma is correct. Sahil Malik, please check, it is not like that. Sahil Malik. You have 3 rings, you can say, or 3 rods, and there are n disks. You have to transfer from configuration 1 to configuration 2 by using the middle disk. So n minus 1 disk have to move twice, one from left to right, another from right to left using the middle one. So therefore, the recurrence for that will be option D. Remember it always. You try to remember. So correct option for towers of Hanoi is T of n is equal to is missing 2t n minus 1 plus constant time. Option D is correct for this. Come on. It's a very simple question. Find the odd one out. Odd question. Odd option. इसमें odd क्या है? Let me see who will answer this correctly. How many will answer correctly?
TVSP is what? Traveling salesperson problem. This is solved using dynamic programming. Optimal binary search tree solved by using dynamic programming. Optimal binary search tree. Knapsack problem also 0-1 knapsack can be solved using dynamic programming. ये तीनों problem dynamic programming से solve कर सकते हैं. ये है divide and conquer. तो odd one बना आपका option है, as many people have suggested. Okay. Full form of B&D. Traveling sales. Let me write. Traveling salesperson. Traveling salesperson problem. OBST is optimal binary search tree. Optimal binary search tree. These are well-known problems. इसलिए short form में लिखे गए हैं. Optimal binary search tree. So these three are using dynamic programming. This is using divide and conquer. That's why odd one is option A. Very correct. चलिए आगे बढ़ेंगे. Tell me answer for this. This is direct problem. Answer for this. Use master method and tell me what is the answer. Come on, boys and girls. Be careful, be careful. Yes. देखिएगा, we'll go with master method. We'll go with master method. N, is it, as a question I'm asking, order of n power log 7 to base 7 is 1 minus epsilon. ये नहीं हो सकता. N, is it theta of n power log a to base b into log n power k? Log n power k, where k is equal to 0, it's satisfied. Therefore, by case 2, this is nothing but n is theta of n into log n power k plus 1 n log n. ये correct answer है. n log n होगा. So option C, as some people have said correctly, is option C. By master method, this is n log n. बिल्कुल सही जवाब. Next question. Again repetition. Next question is repetition. Please tell me, boys and girls. यहाँ पर एक option मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. Sometime in NIC these kind of problems also arise. ये भी आपको mind में रखना है. Consider the algorithm that solve problems of size n by recursively solving two subproblems of size n minus 1, two subproblems of size n minus 1, and then combining the solutions in constant time. The running time of the algorithm would be how much? देखिएगा, तो अपना recurrence जो बनेगा, t of n become 2 times t of n minus 1 plus 1. This is our recurrence. This is our recurrence. तो क्या कोई मुझे बताएगा, before looking at the option, what will be the solution to this problem? Assuming t of 1 is equal to 1, assuming, what will be the order of this? Anybody? Yes, Sham is correct. This is nothing but tower of Hanoi. So what is the complexity of tower of Hanoi? Come on. What will be the complexity of tower of Hanoi? Anybody? No. It is not. When you solve this recurrence, it is not n log n, Sriya. When you solve this recurrence, it is not n log n. If you solve this recurrence, the order is order of 2 power n. Yes, Rishi Sharma is correct. When you solve this recurrence, it is order of 2 power n. None of the options matches. That is what I wanted to tell you. That is unfortunate. And maybe in such cases, for such problems, when none of the options matches, the answer, the marks will be given to all. You don't have to worry about it. So therefore, the correct answer for this is order of 2 power n, but it is not given as any of the options. So marks will be given to all, don't worry. Okay? So that is what we want to tell. Come on. Look at this question. What is the answer for it? What is the main characteristic of bubble sort over other sorting techniques? Over other sorting techniques? Riya, be careful. Rishi Sharma is correct. Sham, be careful. You cannot say it consumes less memory. Base complexity of bubble sort may be similar to other sorting techniques. The important characteristic is it can detect whether the input is already sorted or not.
The important characteristic of bubble sort is it can detect in the first pass itself whether input is sorted, already sorted or not. So therefore, the correct option is C. Correct option is C. That is the main characteristic of bubble sort. Come on, next question. जल्दी बताइए इसका आंसर. डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन. टेल मी द आंसर फॉर दिस. यस, साहिल होटा, करेक्ट. आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वेरी डायरेक्ट. बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट. बेस्ट केस का जो रिकरेंस होगा क्विक सॉर्ट का 2tn/2 + n. ये है बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी. तो आप सॉल्व करोगे तो ऑर्डर ऑफ n log n. सो देयरफॉर एज मेनी पीपल हैव सेड, ऑप्शन ए इज परफेक्टली करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी. इसका आंसर बताइए. These are all many questions from algorithms are not from gate, please. Are not from gate. लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के मेनी क्वेश्चंस आर फ्रॉम गेट. तो मैं ये आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, जो गेट वाला सीरीज, जो गेट वाला प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है, उस पे PYQ के जो वीडियो है आप प्लीज वॉच कीजिए, कंपल्सरी वॉच कीजिए. व्हाट इज आंसर फॉर दिस? कम ऑन. अनुज कुमार, रवि यादव, साहिल होटा, ऋषि शर्मा, टेल मी द आंसर फॉर दिस. Which of the following techniques deals with sorting the data stored in computer memory, RAM, main memory? What do you call such sorting technique as? वो sorting technique को क्या बोलेंगे आप? Whose data basically should be present in computer memory, main memory में होगा. Yes, internal sorting. This is called internal sorting. Such techniques are called not radix sort, internal sort, please. रैडिक सॉर्ट के लिए जरूरी नहीं है. रैडिक सॉर्ट के लिए आपका डेटा कहीं से भी आ सकता है. सच सॉर्टिंग टेक्निक्स आर कॉल्ड इंटरनल सॉर्ट. ठीक है, नेक्स्ट. इसका भी बताइए आंसर. इसका भी आंसर बताइए. Explanation of a sorting technique is given and then you have to tell the name of the sorting technique. You have to tell the name of the sorting technique. Very correct, very correct. Which sorting algorithm sorts by moving the current data element past the already sorted values? Imagine this is my sorted values, sorted data. This is sorted data. Suppose if I am taking a new element x, तो हम यहां पर x insert करेंगे, ये बता रहा है. Repeatedly interchanging with the preceding value until it is at the correct place. You are trying to find the correct place of x in this sorted list. This is what is nothing but insertion sort. So therefore, the correct answer, as many people have said, is A. बिल्कुल सही जवाब. चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, इसका आंसर बताइए. टू 2019 का क्वेश्चन है. बॉयज एंड गर्ल्स, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, एल्गोरिथम्स के गेट के क्वेश्चंस बहुत कम हैं एल्गोरिथम के सब्जेक्ट के, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत ज़्यादा है गेट के. तो मैं एम्फसाइज करूंगा कि PYQ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा देखिए आप, एल्गोरिथम्स के भी देखिए. सिंपल क्वेश्चंस है एल्गोरिथम के, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है गेट के, आप वो वर्कआउट कर सकते हो एल्गोरिथम्स के लिए. चलिए देखेंगे. द बेस्ट रनिंग टाइम इज डिफाइंड एज व्हाट? बेस्ट केस, the least or smallest of all the running time the algorithm takes. बिल्कुल सही जवाब. An input that requires maximum, बिल्कुल गलत. Averaging, ये भी गलत है. So therefore correct answer is A. बहुत सिंपल, डायरेक्ट ये है. चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए. Tell me the answer for this. 2A merge sort. 2A merge sort है. तो जो हमारे एलिमेंट्स है हम सबसे पहले बॉटम में लिखेंगे, राइट. तो इंडिविजुअली आई विल हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स हैं. यहां से लिखूंगा मैं. So we have got 10 elements, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. The elements are 20 and 47, 15 8 9 440
30, 12 एंड 17। 2a मर्ज सॉर्ट मतलब दो दो एलिमेंट्स हम लेंगे और मर्ज कर देंगे। तो हम यहां पर इन्हें मर्ज करेंगे तो बनेगा 20 और 47 ही रहेगा। ये दोनों को अगर मर्ज करेंगे तो बनेगा 8 एंड 15। इन दोनों को मर्ज करेंगे तो बनेगा लिस्ट 4 एंड 9। ये दोनों को मर्ज करेंगे तो लिस्ट बनेगी 30 एंड 40। ये है आपका पास 1। इन दोनों को मर्ज करेंगे तो 12 एंड 17। सेकेंड पास पे 2 है एट द एंड ऑफ सेकेंड पास में अब जाएंगे, ये दोनों को मर्ज करेंगे तो हमारा लिस्ट होगा 8, 15, 20, 47। फिर ये दोनों को मर्ज करेंगे तो बनेगी लिस्ट आपकी 4, 9, 30, 40। ये एज इट इज आएगा, इसके लिए कोई पेयर नहीं है, तो 12 एंड 17। तो 8, 15, 20, 47 देखिएगा, यही है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मैच हो रहा है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग स्ट्रैजेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बहुत सिंपल है। C11 विल बी व्हाट, एक वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और देख लेंगे। 1 into 8, C11 is nothing but 1 into 8 plus 3 into 6. So 8 plus 18, 26. C11 is 26. फर्स्ट ऑप्शन नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ, यहां पर मैच हो रहा है, सो ऑप्शन डी, वेरी सिंपल। यू डोंट नीड टू वर्क आउट अदर्स, यू कैन डायरेक्टली गो। ठीक है ना, वेरी डायरेक्ट प्रॉब्लम, बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर दे दीजिएगा बच्चों प्लीज। टेल मी द आंसर फॉर दिस। Dynamic programming works the problem in what fashion? Top down, bottom up, or maybe left to right or right to left? What is the correct answer? Dynamic programming solve the problem by bottom up fashion. Very correct. Bottom up fashion. B is the correct answer. चलिए next. इसका आंसर बताइए। 0-1 knapsack की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? 0-1 knapsack प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हर प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको रिमेंबर करना होगा, आपको याद रखना होगा टू सॉल्व सच डायरेक्ट क्वेश्चंस। नो 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 नो, इट इज नॉट सी प्लीज, इट इज नॉट सी। हाँ करेक्ट करेक्ट, n into w, that is right. Option C, that is right. Where w is an knapsack capacity. Okay, so that is the correct answer. Next, इसका बताइए आंसर। फैजल नाजरवी, एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस। अगर आप गेट के लिए, कोर सब्जेक्ट्स के लिए गेट का प्रिपरेशन करोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट इनफ फॉर NIC। इसका आंसर बोलिए प्लीज। द गिवन अरे इज R 1 2 4 3। द बबल सॉर्ट इज यूज्ड टू सॉर्ट द अरे एलिमेंट्स। हाउ मेनी पासेस विल बी डन टू सॉर्ट द अरे? बोलिए। What is the answer for 2 passes? Excellently correct. Because फर्स्ट पास में अरे सॉर्ट हो जाएगी, सेकंड पास में आप डिटेक्ट करोगे द अरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड, यू कम आउट, सो देयरफॉर द आंसर इज 2, बी, दैट्स राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम कौन सा बेस्ट अप्रोच से फाइंड आउट कर सकते हो? टू फाइंड आउट वेदर ए साइकिल एग्जिस्ट इन द ग्राफ, द विच इज द बेस्ट अप्रोच, विच इज द बेस्ट सर्चिंग स्ट्रैटेजी दैट यू कैन यूज? It is very simple. Sahil Hota, it is not D. Yeah, among B and C, depth first search again is better. Depth first search is again better. So therefore, depth first search we can use because you can detect the back edges very comfortably in depth first search. Yes. Even B is also correct, but because it is MCQ, so I can go with the C option. I can go with C option. Correct. Next. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज वर्कआउट एंड टेल मी दिस इंटरेस्टिंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। अच्छा वर्कआउट करके बताइएगा प्लीज। जब तक मैं यहां पर ग्राफ भी उतारूंगा, ग्राफ का स्ट्रक्चर लूंगा, आप भी वर्कआउट कीजिएगा। ओके, चलिए आप अपना पहले ऑप्शन बताइए, फिर हम यहां पर कंपेयर करेंगे वेदर यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग। निशु कुमार इज सेइंग 6। ओके,
Other people please. Is it 6? Okay, ठीक है, देखेंगे. ठीक है. देखिए सबसे पहले all edges of cost 1 I will include. This is cost 1, this is cost 1, this is cost 1, all once, because minimum cost spanning tree. So this is cost 1 and this is cost 1, right? So 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, all of cost 1 are included, all of cost 1 are included. ठीक है ना? So and the number of vertices are 1 2 3 4 5 6 7 8 9, means I need 8 edges. I need 8 edges. So far I have added 1 2 3 4 5 edges. I will consider those edges which can be used to connect others, right? Other 1 2 3 4 5. So I need 3 more edges. I need 3 more edges. So what is the compulsory edge which I have to add to connect these two? Maybe connecting these two segments I have to consider this compulsory. Is one additional edge, right? So after that, listen boys and girls, here I can add either this or this, either this or this. So for that I say 2C1 first. Am I right? Is this okay so far? Either I have to add this edge or this edge, both cannot be added. So for that option is 2C1, for that option is 2C1. Yes, ठीक है. चलिए हम मानेंगे यहां पर हमने ये एड्ज किया. तो so far I have added 1 2 3 4 5 6 7. One more edge is needed. One more edge is needed. What is that edge? That may be either this edge to complete, or this edge, right? Or this edge. This cannot be the edge. At any cost, this cannot be the edge, right? This cannot be the edge. Please observe. This edge cannot be considered. Please observe. This cost of 2 cannot be considered because that will form a cycle. This also cannot be considered. This also cannot be considered. So either it has to be this edge 1, or this 2, or this 3. So out of 3 I have to add 1. Out of 3 I have to add 1. So therefore 3C1. That's all. 2 into 3, 6. As many people have said rightly, the correct answer is 6. Correct answer is 6. Very correct. चलिए आगे बढ़ेंगे. Tell me the answer. Direct question. Please work out and tell what is the answer. Max heap. So the heap is 40, 30, 20, 10, 15, 16, 17, 8 and 4. Now consider the value 35 inserted after insertion. What is the new heap? Come on, you do it. I am also doing it here. So I have 40, then 30 and 20, and then I have 10 and 15, and then I have 16 and 17, and then I have 8 and 4. This is my heap. We need to add the value 35. I have to add it to the left. So यहाँ पर add करने के लिए मैं दूसरा color ले लूँगा 35. So 35 and 15 are exchanged, right? First. So 35 and 15 are exchanged. So 35 here, 15 is here. Next 35 and 30 are exchanged. Next 30 and 35. So this will become 35. This will become 30. So this will become 35, this will become 30. So the heap will read as 40, 35, 20, 40, 35, 20, then 10, 30, 10, 30. So therefore the correct answer is B. Yes, correct answer is B. Very good. Very good. Chaliye, next question. This is a direct question. This is PYQ of gate. I mean, solving it here will take more time. I advise you, I think this link is slightly broken. I would advise you to take this link like this, not this. It is from here to, it is not from C, it is from this node. It is from E to G with the cost value 2. So when you solve this problem, I will tell you, you can watch my PYQ video available on YouTube, right? Available on YouTube of PYQ platform. You can see this. The answer for this, when you solve using Dijkstra's algorithm, using Dijkstra's single source shortest path algorithm, Dijkstra's algorithm, when you solve of single source shortest path, the answer will come out to be SACT. SACT, not SACT, SBDT, SACT. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 6 plus 4, 10. This path will be reported by Dijkstra's algorithm when you solve it using
Dijkstra's algorithm, SACET. So this will be the path. You can work out using greedy based Dijkstra's algorithm, option D. Okay, next. Tell me the answer for this. Direct question, come on. Which of the following is useful in traversing a given graph by breadth first search? Breadth first search traverse करने के लिए जो लाइव नोड्स आप स्टोर करोगे, कहां स्टोर करोगे, क्यू में स्टोर करोगे, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन इज डी. चलिए आगे बढ़ेंगे. इसका आंसर देखिएगा, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का है. तो इफ यू ट्राई टू वर्कआउट, यहां पर मैं आपको सिर्फ रीड कर लीजिएगा एक बार क्वेश्चन. दिस इज PYQ अगेन, गेट का क्वेश्चन है. दिस इज PYQ गेट. फोर मैट्रिसेस है. यस, ऋषि शर्मा इज करेक्ट. निशु शर्मा, स्टैक इज नॉट यूज्ड बाय BFS, स्टैक इज यूज्ड बाय डेप्थ फर्स्ट सर्च, क्यू इज यूज्ड बाय ब्रेडथ फर्स्ट सर्च. निशु शर्मा, बी केयरफुल. तो जब फोर मैट्रिसेस होंगे ना बच्चों, I will show you here. When you have four matrices, say M1, M2, M3, M4, I can have three possible points of splits. So if I'm splitting about the first matrix, I will have the configuration like this. So I'm telling you all the configurations using which you can simplify, then you can get the answer which I will tell you. Or you can split about third position, you will get the matrix like M1, M2, M3, M4. And for this you can have two configurations. You can split about first matrix M2, then M3, M4, or M2, M3 with M4. And here you can have two possibilities, M1 with M2, M3 and M1, M2 with M3. ठीक है? So if you take the values which are given in the problem and simplify and take the minimum of all this, the answer will come out to be 19,000. So you can use this formula, use this tree and get the answer. So it will come out to be C, 19,000. Previous gate question. Okay. So go for the next. Tell me the answer for this. Direct question. अभी जो हमने डिस्कस किया फिर से रिपीट हुआ इन ए डिफरेंट वे. अभी जो हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले with regard to BFS and DFS. Yes. Q for BFS and stack for DFS. Option B is correct. अभी जो हमने बात की वही क्वेश्चन है इन ए डिफरेंट मोड. चलिए इसका आंसर बताइए प्लीज. टेल मी द आंसर फॉर दिस. In a given following graph among the following sequences, which are depth first search traversals. चलिए देखेंगे. A, is it possible? Yes. From A I can go to B. Yes. From B I can go to E. Yes, you can go A, B, E. After that you can go to G. After that H. After F. This is possible. A, B possible. F possible. A, B, F possible. From F I have to go to E. E is not possible. ये नहीं होगा. A, B, F. A, B, F is possible. From F, H is possible. H to G, G to E, this is possible. A, F possible. F to G is possible. Yes, G to H is possible. H to B is possible. This is possible. So therefore 1, 3 and 4, right? 1, 3 and 4, option D. Very correct. Many people have given correct answer. Excellent. चलिए. Again repeated question देखिएगा. फिर से repeat हुआ है question. Which data structure is used for depth first search traversal? Stack for storing live nodes, untraversed node. That is correct. चलिए next. इसका बताइए आंसर. Worst case complexity of insertion sort, merge sort, quick sort. Insertion sort is n square, merge sort is n log n, quick sort is n square. That's it. N square, n log n, n square. Means option D. Option D, very correct. चलिए अगेन टेल मी द आंसर फॉर दिस. फर्स्ट केस क्विक सॉर्ट का रिकरेंस क्या होगा? रिकरेंस होगा ऑप्शन बी. ये होगा ऑप्शन बी. वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट, राइट? वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट का रिकरेंस पाइवोट एलिमेंट जो फर्स्ट या लास्ट पोजीशन पे फिक्स होगा, क्रिएटिंग ए लिस्ट ऑफ T of n minus 1 प्लस ऑर्डर ऑफ n फॉर partitioning यहां पर होगा. So therefore the correct answer is B. चलिए next question. So these are all the questions which we have basically taken for both
algorithms and operating systems. ठीक है ना? So my again advice to you, once again I am reminding you that please watch, यहाँ पे लिख दूंगा मैं आपको, PYQ series on PW platform or Gatewallah platform, right, for crash course Gate 2023 का. दोनों सब्जेक्ट्स आप देख सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एल्गोरिथम्स, राइट. तो आप देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा. आप देखेंगे PYQ अगर आप गेट के देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम और एल्गोरिथम्स के, दैट इज मोर देन सफिशिएंट इनफ, राइट. So with that, I wish you all the best. Thank you very much for your patience watching the video. I hope you might have enjoyed the session. I wish you good luck for your exam and my best wishes. Okay, thank you very much.